Good morning, students. I hope you all are doing well. Welcome back to the online class of computer. Today we are going to start chapter 2, Advanced Features of Word 2016, Part 2. Today's topics are page formatting, and in page formatting we are going to learn the topics changing page orientation, setting paper size, inserting a page break, and the next topic will be column formatting. Let's start. First topic is page formatting. Suppose you have a page and how can you make it attractive? That's the thing we talk about in पेज फॉर्मेटिंग. पेज फॉर्मेटिंग में हम देखेंगे कि हम हमारे पेज को कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं सो दैट इट इज अपीलिंग टू द ऑडियंस. Okay, so what is the definition of page formatting? It is the arrangement of the layout and all the elements of a page so that it looks appealing to the रीडर्स. आप किस तरीके से पेज का लेआउट जो होता है उसे अरेंज करते हैं, पेज के एलिमेंट्स को प्रॉपरली सेट करते हैं सो दैट वो ऑडियंस को अट्रैक्टिव लगे. ओके, सो पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल इन दी लेआउट टैब. लेआउट टैब के अंदर आपको सारे पेज फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मिलते हैं. देयर आर मैनी पेज फॉर्मेटिंग टूल्स. पेज को फॉर्मेट करने के हमारे पास काफ़ी टूल्स होते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द इमेज. दिस इज द इमेज दैट इज शोइंग यू द लेआउट टैब. This is called the layout tab, and in this single layout tab you have so many page formatting options. आपके पास कितने tools हैं पेज को फॉर्मेट करने के. You can set the margins, you can set the orientation, you can set the paper size, you can set the columns, then you can set the page breaks. So all these we are going to study in the next topics. I hope it is clear that layout option is given here. And in this we can do the page formattings. I hope this is clear. Now next we talk about the option that we can do in page formatting. So the first option is changing page orientation. Now what do you mean by page orientation? Orientation of a paper means the direction in which the text or image appears on a page. किस डायरेक्शन के अंदर पेपर के ऊपर कोई भी इमेज या टेक्स्ट हमें शो हो रहा है उसे हम ओरिएंटेशन कहते हैं. ओके, सो ओरिएंटेशन इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज पोर्ट्रेट and second is landscape. If we talk about portrait, portrait is selected by default. In MS Word 2016, portrait by default selected होता है. If you want to change the page orientation to landscape, then you can change it if it is required. Okay, so let's take an example of two photographs. First is school ID card photograph and second is class photograph of a student in a class. क्लास के अंदर स्टूडेंट है, उसने फोटो क्लिक करवाई है. एक फोटो उसने स्कूल आईडी कार्ड के लिए क्लिक करवाई है और एक क्लास फोटोग्राफ के लिए करवाई है. सो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा? जो आपकी स्कूल आईडी की फोटोग्राफ होगी दैट विल बी शॉर्ट, वो छोटी होगी टॉप और बॉटम से और साइड से वो लॉन्ग होगी. बट इफ यू टॉक अबाउट द क्लास फोटोग्राफ, तो क्लास फोटोग्राफ आपकी शॉर्ट होगी साइड से बट वो लॉन्ग होगी टॉप एंड बॉटम से. सो दिस इज द डिफरेंस. इफ यू टॉक अबाउट द फोटो, स्कूल आईडी फोटो, तो वो होगी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के अंदर. लेकिन अगर आप क्लास फोटो की बात करेंगे दैट विल बी इन लैंडस्केप फॉर्म. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप. आई होप till here it is clear to everyone. Now next we see the example. This is the example for portrait. Portrait में ऐसे आपका टेक्स्ट या इमेज दिखता है इस डायरेक्शन में, एंड लैंडस्केप में इस डायरेक्शन में आपकी फोटोग्राफ या टेक्स्ट आपको शो होता है. I hope it is clear. Now next we see the steps how we can open page orientation. To open page orientation you have to click on the layout tab. From here you will go to the orientation option and from here you will click on the down arrow and you will get both the options, portrait as well as landscape. इन दोनों में से आपको जो भी सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं. पोर्ट्रेट ऑप्शन इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट, ये पहले से ही सेलेक्टेड होता है. यू कैन चेंज इट टू लैंडस्केप ऑल्सो. आई होप टिल हियर इट इज क्लियर. Now next we talk about the second option that we can do in page formatting, that is setting
paper size. Now, what do you mean by paper size? It is the actual length and width of the paper in centimeter. पेपर की क्या लेंथ है और क्या उसकी width है सेंटीमीटर के अंदर, that measures the paper size. Okay, you need different paper sizes for different types of documents. अगर आपके अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनके लिए आपको अलग अलग पेपर साइजेस चाहिए होते हैं. ओके, द डिफॉल्ट पेपर साइज इन वर्ड इज पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट बाय डिफॉल्ट सेट होता है, मैंने आपको बताया ओरिएंटेशन पेपर का बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है. एंड नाउ द स्टैंडर्ड पेपर साइज इज A4. A4 जो पेपर का साइज होता है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी सी द स्टेप्स हाउ वी कैन सेट द पेपर साइज. वी अगेन गो टू द लेआउट टैब. लेआउट टैब में जाएंगे, यहाँ से वी विल गो टू द साइज ऑप्शन. वी विल क्लिक ऑन द डाउन एरो एंड वी विल गेट ऑल दीज ऑप्शंस टू सेट द पेपर साइज. यहाँ से हम कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उस अकॉर्डिंग पेपर साइज सेट हो जाएगा. आई होप इट इज क्लियर नाउ. Now next we talk about the third type of option in page formatting, that is inserting a page break. Now what do you mean by page break? It means instructing Word to end a page at a certain point which is different from the current paper size of the document. Whenever we work on a document, तो document का जो original size होता है वो different होता है. But when we give the page break, जब बीच में एक ब्रेक दे देते हैं पेज के तो उसका साइज डिफरेंट हो जाता है. ओके, सो वर्ड को इंस्ट्रक्ट किया जाता है MS वर्ड को कि वो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके एंड कर दे पेज को. दैट इज कॉल्ड पेज ब्रेक. नाउ विद द एग्जांपल आई विल शो यू हाउ वी कैन ओपन पेज ब्रेक ऑप्शन. ओके, अगेन वी विल गो टू द लेआउट टैब. फ्रॉम हियर वी विल गो टू ब्रेक्स ऑप्शन. यहाँ से हम ये डाउन एरो पे क्लिक करेंगे. सो वी विल गेट ऑल दीज ऑप्शंस. नाउ यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम, जो भी आपको चाहिए, जैसा आपको पेज ब्रेक चाहिए वैसा आप सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी सी द एग्जांपल ऑफ द पेज ब्रेक. आप देख सकते हैं आपने एक पेज पे काम किया, फिर आपने एक ब्रेक दे दिया और दूसरे पेज से स्टार्ट कर दिया. सो दिस इज कॉल्ड पेज ब्रेक. आई होप इट इज क्लियर. Now, our next topic is column formatting. Now, what do you mean by column formatting? Let's take an example. If you have ever read newspapers, magazines and books, आपने कभी magazines देखी हो, books देखी हो, तो एक ही पेपर के ऊपर कई बार जो मैटर लिखा होता है, जो टेक्स्ट लिखा होता है, that is divided into columns, either 2 columns or 3 columns, okay, and so on. सो कॉलम फॉर्मेटिंग मीन्स हम टेक्स्ट को कैसे 2 या मोर कॉलम्स के अंदर डिवाइड करते हैं एक ही पेज के ऊपर. दैट इज कॉल्ड कॉलम फॉर्मेटिंग. सो वर्ड हैज अ ऑप्शन टू ले आउट सम टेक्स्ट और द एंटायर डॉक्यूमेंट इन कॉलम्स. तो वर्ड के अंदर एक फीचर है जो पूरे डॉक्यूमेंट को या कुछ टेक्स्ट को, उसके लेआउट को डिवाइड कर देता है 2 और मोर कॉलम्स के अंदर. लेट्स हैव एन एग्जांपल how we can open this option. Again we will go to layout tab. From here we will select columns and a list will get open. आप देख सकते हैं लिस्ट ओपन होगी. यहाँ से आप पेपर को किसी भी ऑप्शन में डिवाइड कर सकते हैं. आप 1 में ही रखना चाहते हैं, 2 में रखना चाहते हैं, 3 में कॉलम्स डिवाइड करना चाहते हैं. यू कैन सी हियर एग्जाम्पल्स आर शोन. Okay, this is how you can open the column formatting option. Next we have the example. Let's see. See, the paper is divided into 3 columns. इस तरीके से हम पेपर को डिवाइड कर सकते हैं 3, 2 कॉलम्स में, 4 कॉलम्स में या मोर देन 2 कॉलम्स में. ओके, यू कैन डिवाइड द पेपर इन एज मेनी कॉलम्स यू वांट. आप देख सकते हैं आपने 3 कॉलम्स में पेपर को डिवाइड किया है. दिस इज कॉल्ड कॉलम फॉर्मेटिंग बिकॉज दीज आर कॉल्ड कॉलम्स and it is divided into 3 columns. I hope this is clear. So go through the topics that we have learned today. Thank you. Stay safe and stay healthy.